कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद। Zero over, Lieutenant General Dr. D.P. Watts. D.P. Watts. Sri Neeraj Rangi. Neeraj Rangi. सर, आपकी इजाज़त से मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन से साझा करना चाहूँगा। अकाल के कारण, सूखे और अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान कृषकों को और क्षेत्र को होता है, उसमें स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड के तहत जो गठन किया गया है, उसमें वर्तमान में एसडीआरएफ के मापदंडों के अनुसार केवल लघु और सीमांत किसानों को ही इसका लाभ मिलता है। ऐसे में जो परिस्थितियां होती है, दुर्भाग्यवश ऐसे कई किसान हैं जिनके पास में ज़मीनें नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, वो अपनी फसल किसी और क्षेत्र में बोते हैं और उनके जो पशु हैं उन्हें भी कई तरह के नुकसान होते हैं। ऐसी परिस्थितियों उनमें अधिकांश रूप से जो है दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग अत्यधिक हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें भी इसमें समायोजित किया जाना चाहिए और इस रेफरेंस में राज्य सरकार ने लगातार गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को यथासंभव समय समय पर जो है सूचित भी किया है। सूखे की परिस्थितियों में कृषकों की फसलें जो हैं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं और ऐसे में जब चारा नहीं होता है तो पशुओं को खिलाने के लिए जो है चारा उन्हें प्राप्त नहीं होता है और ऐसे में वो व्यक्ति जो है वो पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और उन पशुओं को उनके रखरखाव के लिए, उनके चारे की, उनके खानपान की व्यवस्था जो है वहाँ के क्षेत्र के स्थानीय गौशालाएं जो हैं वो करती हैं और कुछ परिस्थितियों में वो लोग अपने पशुओं को पुनः वापस लेने भी नहीं आते हैं। ऐसे में उन पशुओं की देखरेख पूरे वर्ष वही गौशालाएं जो हैं वो करती हैं। मेरा इसमें निवेदन है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के जो एसडीआरएफ जो नॉर्म्स हैं, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड के जो नॉर्म्स है, उसमें पैरा 6 में जो पॉइंट है उसमें भूमिहीन किसानों के पशुओं को सहायता प्रदान करने एवं गौशालाओं को पशु शिविर के रूप में शामिल करने हेतु आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी। श्रीमती शांता छेत्री। Oh, good. At least one member is following the advice. Thank you, sir. Thank you, sir, for allowing me to speak. I would like to draw the kind attention regarding the recommendation made by the West Bengal government via their letter number dated 28 February 2014 for granting of scheduled tribes status to 11 communities living in Sikkim and other Gorkha-dominated states and areas. Sir, this is the voice of Darjeeling and Tarai doers and not Bengal. As per the Government of India on 15 June 1999, further amended on 25 June 2002 has laid down the modalities. As per the modalities, only those proposals which have been recommended and justified by the concerned, the state government, UT administration and concurred with by Registrar General of India and National Commission for Scheduled Tribes are to be considered and legislation amended. In consequence, the state of West Bengal has recommended and justified.
Sir, I humbly urge the August House to seek a detailed explanation whether the recommendation by the West Bengal state government has been concurred with by Registrar General of India and National Commission for Scheduled Tribes. And the reason for extreme delay in the interest of 11 Gorkha backward tribes within which time frame the legislation be amended. Thank you, sir. Thank you, Santaji. Sri Vaiko, Associate, please send your slip. Vaiko? नहीं है? There. 0 over. Yes. Honorable Chairman, with your kind permission, I will draw the attention of the House to a very serious matter concerning the lives of the citizens of India. For the past 38 years, our fishermen from Tamil Nadu are attacked repeatedly by the Sri Lankan Navy. Their boats are destroyed. They are killed in the sea itself. And what happened when there was a cricket match between India and Sri Lanka, in the sea itself, they warned the fishermen, our fishermen, if we lose the match this time, nobody will go home alive. You will be killed. The same happened. They lost the match. We won the match. The next day, the 4 fishermen were cut to pieces and their bodies were floating in the seas. I went to every house of the village and the women were weeping and crying. This is going on for the past 40 years. When 2 Italian fishermen were killed by mistake, what happened? The Supreme Court itself intervened and 2 crores of rupees was compensated to the affected families of the Kerala fishermen. Now, I would like to request the government what sin the fishermen of Tamil Nadu have committed. When Gujarat fishermen are attacked, Indian government takes very serious concern. Now, sir, even yesterday they were attacked, our Indian fishermen, our Tamil Nadu fishermen. This has become the order of the day. Every day it is going on. I would request the government of India to take a serious note of this and to stop this attacking and killing of our fishermen. Thank you, sir. Right, Vaiko. Sir, Associate Naam भेज दीजिए. Sri Aramaram Karim and Dr. V. Sivadasan, you have to share time. Yes, sir. Thank you, respected Chairman. I am raising an important issue related with ICDS, NHM and midday meal. Now it is known as PM Poshan scheme. Workers who are engaged in these schemes. They are serving women and children of this country. Their services are extended to more than 20 crore children under 14 years and around 3 to 5 crore women get the basic right to food and health through these schemes. Sir, around 60 lakh women, 26 lakh Anganwadi workers and helpers, 27 lakh midday meal workers and 10 lakh ASHA workers deliver these services to each household of the country. But they are not recognized as workers. They are still treated as volunteers and giving a meager amount as honorarium. The minimum wages are not extended to them and no social security or pension schemes are extended. Every year, budget allocation is getting reduced. It is very unfortunate, sir. In 21-22 and 22-23, budget allocation is drastically reduced. In these circumstances, I request through you, sir, a minimum wages, it is recommended by 45th Indian Labour Conference, that is 26,000 per month, and other social security benefits such as pension and other social security schemes also should be extended these workers. Right. Today,
thousands of the scheme workers are conducting a dharna at the capital city, raising these issues. So Right. I appeal the government to look into this matter. Right, Karimji. Shivodasan. Chair. So now in Delhi we are welcoming spring season. But how the spring will come to the lives of the young children in our country? Anganwadis are the gardens of the children. Is there they are growing there? We are seeing the union government is not ready to provide the financial assistance for proper drinking facility, proper space management, and for proper arrangements of the amenities. The workers and helpers in Anganwadis are getting only meager amount as salary. So the fixed salary of a worker is only 4,500. The union government is only providing 60% of that. That means is 2,700. So this is very low. The fixed salary of the helper is 2,250, and the union government is providing only 60%. That is 1,350. Majority of Anganwadis are working without proper space. Sir, they don't have basic amenities. Our finance minister has said 2 lakh Anganwadis will be modernized, but there is no provision, budget Right, provision. Shivodasan, Sir, be brief. so I am requesting to the government, sir, the intervention of the government is very necessary. We need to protect our garden and protect our young children. They are facing lot of problems because Right. malnutrition and other things. Thank you. So the salary of the teachers of Anganwadis will be increased, sir. This is my request. Thank you. The others who are raising their hands, please send your names so that they can be included. Sri Venkataramana Rao Mopidevi. Thank you, Chairman, sir. Sir, naval events and naval exercise are necessary tools for securing allies and improving Indian naval capabilities, sir. All the coastal cities in the country take pride in welcoming a naval exercise or events to their cities. But the restriction imposed on fishing and fish trading during these events are affecting the livelihood of fishermen, sir. Fishermen fishing for a longer duration ranging from the 1 to 2 weeks might not get several affected. But traditional and small motorboat fishermen, depending on daily fishing activities, are financially affected during the naval events. Moreover, the restriction on the sale of fish and the harbor and other areas near the vicinity of naval events would impact the financial condition of small fish traders, sir. Therefore, through these honorable chairmen, sir, I would request union government to compensate the fishermen for the loss, including due to the imposing of the restriction by the government on fishing and fish trading activities during the naval events and naval exercise at Visakhapatnam, sir. Thank you, sir. Thank you. P. Wilson. I rise to bring to the kind attention of the House about the crisis which the state of Tamil Nadu is going through with regards to the pending dues from the union government. India is union of states and the Tamil Nadu is one of such states. It is pertinent to note that the union government, through the non-distribution of funds in various schemes including the GST compensation, owns to the government of Tamil Nadu an outstanding amount to the tune of rupees 20,287.38 crores under 38 heads. Chairman, sir, I will read 17 heads, please permit me. GST compensation comes to 9,842.58 crores. Customed millets rice subsidy comes to 2,203.25 crores. MNGRA comes to 1,360.74 crores. Jal Jeevan Mission 1,086.05 crores. This PMAY comes to 964.21 crores. Then grants for rural local bodies comes to 799.80 crores. Then scheme for development of scheduled castes for the pre and post metric scholarship comes to 704 crores. Implementation of smart cities comes to 584 crores and grants for the rural local bodies comes to 420 crores. Then Sarva Shiksha's Abhayan elementary education comes to 370.64 crores. Then the state disaster responsive comes to 204 crores. Then old age pension comes to 127 crores. Then per drop, more drop comes to 125 crores. Secondary education, the amount comes to 115.27 crores. Midday meal comes to 113.18 crores. Flexible communicable disease comes to 109.59 crores. Thus, Chairman, sir, about 20,287.38 crores is not given to Tamil Nadu government and the amount is due.
Chairman, sir, in Amrut 2.0 scheme, the allocation of funds to the state of Tamil Nadu is not adequate for this financial year when compared to the other states of ruling party. The Honourable Minister is requested to kindly look into this issue. Please. When the amount realizable under the GST compensation is enormous and the union government is not going against the GST Act 2017, when the union government took away the powers of the state to collect indirect taxes by legislating GST tax, it was on the promise that the state shares would be promptly paid. It was on this premises the state consents were obtained by delaying payment. The union government is committing breach of trust and is violating the undertaking made on the floor of the parliament. Mr. Wilson. The state of Tamil Nadu and the people have been ignored. The union government has to look into this issue immediately and release the funds to the state of Tamil Nadu so as to ensure that there is smooth functioning, implementation and running of the schemes and achieve the respective objectives. Mr. Thank you, Wilson. Chairman, sir. Shri Ajay Pratap Singh. है? माननीय सभापति महोदय, नशा एक सामाजिक बुराई है और नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम करने के लिए समय समय पर सरकारों ने अनेक उपाय किए हैं। बिहार और गुजरात जैसी सरकारों ने तो संपूर्ण शराबबंदी भी लागू की है, लेकिन इन दिनों बाज़ार में नशे का एक नया उत्पाद है कोरेक्स। कोरेक्स खांसी की दवा है, लेकिन इसका उपयोग खांसी से ज़्यादा नशे के लिए किया जा रहा है। इसका सेवन करने के पश्चात मन मस्तिष्क शून्य हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है और आज हमारी युवा पीढ़ी इसका अधिकाधिक प्रयोग कर रही है। इसी तरह आयोटेक्स है, आयोटेक्स को भी ब्रेड में लगाकर हमारी युवा पीढ़ी इसका सेवन कर रही है और इसके माध्यम से उनके शरीर पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन दोनों ही उत्पादों पर सरकार या तो प्रतिबंध लगाए अथवा इसका नियामकीकरण करे, जिससे कि इसकी बिक्री नियंत्रित हो सके और जो मर्ज के इलाज में जिसका उपयोग होता है केवल उतने तक ही इसकी बिक्री सीमित की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मंत्री जी कौन है? हेल्थ मिनिस्टर ना? ये कोरेक्स और आयोडेक्स हेल्थ मिनिस्टर में कैसे? लेट हिम टेक नोट एंड देन brief me later. Sri Sushil Kumar Modi and Vijay Sai Reddy, how to share time. सभापति महोदय, इस समय देश के अंदर बैंक फ्रॉड के 100 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है फॉर द कंसेंट विद द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अमाउंटिंग टू ₹50,000 करोड़। और ये चीटिंग, फॉर्जरी, मिस एप्रोप्रिएशन और बैंक फ्रॉड के जो केसेस हैं और राज्य सरकारें इसके इन्वेस्टिगेशन की अनुमति नहीं प्रदान कर रही हैं। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यस बैंक नाम का जो बैंक है उसके 3,664 करोड़ के 5 केसेस पेंडिंग हैं पिछले 1 साल से, जिसमें IL&FS के ट्रांसपोर्टेशन वर्क्स, IL&FS के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डेवलपमेंट और CEO और राणा कपूर जो यस बैंक के CEO थे 1,353 करोड़ और चेयरमैन MD राणा कपूर के 225 करोड़। तो केवल यस बैंक ने 5 केसेस रेकमेंड किया है फॉर इन्वेस्टिगेशन विच अमाउंट्स टू 3,664 करोड़ एंड द केसेस आर पेंडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर द लास्ट 1.5 ईयर। उसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3,046 करोड़ के केसेस पेंडिंग है। DS कुलकर्णी डेवलपर्स 433 करोड़, कॉक्स एंड किंग्स 624 करोड़, जेट एयरवेज के 1987 करोड़। उसी प्रकार सभापति महोदय, यूनियन बैंक के केवल कॉरपोरेट पावर लिमिटेड जिसके मालिक मनोज जायसवाल 4,000 करोड़, सिक्किम फेरो एलॉयज लिमिटेड 448 करोड़ और PNB के वदराज सीमेंट्स और EMI ट्रांसमिशन कुल सभापति महोदय केवल एक स्टेट, मैं आ रहा हूँ सभापति महोदय, एक स्टेट मुंबई ने, एक राज्य, एक शहर मुंबई में 13,000 करोड़ से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड के केसेस 1 साल से पेंडिंग है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसेंट नहीं दे रही है CBI को और बैंक फ्रॉड के केसेस की जांच करने के लिए। नो स्लोगन्स, नो कमेंट्स प्लीज। और अगर देश के सभी राज्यों को लिया जाए तो दिस अमाउंट्स टू मोर देन 50,000 विजय साई रेड्डी, आपका टाइम समाप्त हो गया। विजय साई रेड्डी महोदय, सुशील जी प्लीज।
No allegations will be going on record. Wait, अब बैठ जाइए प्लीज, ये इश्यू नहीं है प्लीज। संजय राउत जी, Sanjay Raut, this will not go on record. In spite of my instruction, if people are standing, their names has to be put in the bulletin. Please, this secretariat, take note of the people who are defying the chair and put their names in the bulletin. That is the only way. Right, under please. Sushil Modi, what you are saying is not going on record after this thing is over. Please. Sri Vijay Sai Reddy, half a minute, please. No, this is not proper. After Sushil Modi ji, Mr. Sushil Modi, it will not go on record. Whoever defies the chair and goes beyond the time, this side or that side, no side at all. It has to be understood by one and all. Otherwise, there is no. When you people do, they will clap, and their people do, you will clap, and people will laugh at us. Try to understand this. Very serious. I am not saying it for any personal this thing. Please see to it that whenever the chairman says something, it should be followed by one and all. When I say time is over, time is over. This has to be understood by one and all. Otherwise, it will be very difficult to have a properly smooth house. And let the television people and media and secretariat take note. Once I say over, nothing shall go on record, nothing shall be reported, and such people should never be supported. Yes. Sri Rajamani Patel, it is live is going on. Live is going on. One has to understand. Rajamani Patel. No, you can't help it. Vijay Sai Reddy will see some other time. We'll see some other time. बिंध कला साहित्य अकादमी के गठन बाबत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कई विभिन्न अकादमियों का गठन किया गया है। बिंध क्षेत्र कला साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रतिभाओं के क्षेत्र में काफ़ी संपन्न है, लेकिन बिंध क्षेत्र की अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतिभाएं दबी हुई हैं। बिंध के बघेली भाषा और बघेलखंड का व्यंजन काफ़ी लोकप्रिय है। काष्ठ कला, सुपारी, खिलौना कला, नृत्य कला महत्वपूर्ण हैं। बिंध क्षेत्र के प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु अकादमी का गठन किया जाना आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि बिंध की जनता की भावनाओं को देखते हुए बिंध कला साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी का शीघ्र गठन किया जाए। धन्यवाद। श्री राम विचार नेतम जी है नहीं, राइट। श्री दीपेंद्र सिंह हुडा, फिर नाम बुलाए। एक मिनट, दीपेंद्र जी बुलाए तो खड़े होना चाहिए ना। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। माइक हाँ, माइक इज दैट साइड। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ खनन प्रभावित प्रदेश है और इस खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के माध्यम से राज्य को धनराशि आवंटित की जाती है और इसके व्यय हेतु नियम भी निर्धारित किए गए हैं और केंद्र सरकार ने इस राशि को उपयोग खनन प्रभावित गांव में खर्च करने का प्राविधान भी तैयार किया गया है, किंतु इसकी अनदेखी करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में इस मद का उपयोग अन्य स्थानों के अलावा अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य की जगह कंबल वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय का उन्नयन का कार्य भी इसी मद से किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह का गड़बड़ी डीएमएफ मद से की जा रही है। नियमानुसार 7 दिन पूर्व डीएमएफ परिषद की बैठक की सूचना दिया जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से बैठक किए जाने की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। खनन प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधि एवं इस समिति के सदस्यों से कार्यों के प्रस्ताव भी नहीं मांगे जाते और न इसके लिए अवसर दिया जाता है। कार्य में क्रमबद्ध जानकारी दिए जाने की जगह महज औपचारिकता निभाई जाती है। परिषद के संज्ञान में लाए बिना ही कार्य नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि डीएमएफ से कराए जा रहे कार्यों में भारी अनियमितता होने के भी बाद भी उसकी किसी प्रकार की गुणवत्ता की जांच और न उसकी
अनियमितता की जांच के बारे में किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपकी अनुमति से विषय हमने उठाया है और इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। श्री दीपेंद्र सिंह हुडा। सर, माननीय सभापति महोदय, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मेरी मांग उठाने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, यदुवंशी शौर्य का इतिहास किसी के परिचय का मोहताज नहीं। यदुवंशी शौर्य गाथा का संक्षिप्त मैं वर्णन करूं, उसमें विशेषकर मैं अहिरवाल क्षेत्र का भी संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं, जो दिल्ली के डाबर क्षेत्र से दक्षिणी हरियाणा और पूर्व उत्तरी राजस्थान तक ये क्षेत्र आता है। यदुवंशी समाज में जो समाज हल और हथियार से जिस समाज का बहुत पुराना नाता है, और ये अहिरवाल क्षेत्र, इस क्षेत्र में कन कन में, कोने कोने में इस क्षेत्र में जय जवान जय किसान का नारा अगर गूंजता है, कहीं प्रतीक है, तो अहिरवाल क्षेत्र है। देशभक्त ये इलाका है। जब जब देश में कोई आक्रमण हुआ, इतिहास ये बताता है, चाहे वो 1398 तैमूर के आक्रमण के समय दुर्जन साल सिंह और जगराम सिंह जैसे वीर योद्धाओं की वीरता से आक्रमणकारियों का सामना किया गया हो, चाहे वो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय रेवाड़ी नरेश राव बाल किशन के नेतृत्व में 5000 अहीर भाइयों ने सीमाओं की रक्षा करते अपना बलिदान दिया हो, या 1857 की क्रांति हो, जिस क्रांति में अहिरवाल नरेश राव तुलाराम जी के शौर्य गाथा को कौन नहीं जानता, उनकी वीर गाथा को, और अहीर भाइयों की वीर गाथा को कोई नहीं जानता। चाहे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और ब्रिटिश फौज ने उस समय अहीर भाइयों की भर्ती पर रोक लगाई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दोबारा से अहीर भाइयों के शौर्य को याद किया गया और 19,500 अहीर सैनिकों की भर्ती की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में 39,000 अहीर सैनिकों की भर्ती की गई। विक्टोरिया क्रॉस तोपखाने में अकेला हवलदार उमराव सिंह का शौर्य आज याद किया जाता है। लेकिन ये देशभक्त कौम है और इसीलिए सिंगापुर में इन्होंने अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत से बगावत की और आईएनए सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आईएनए में अहीर सैनिकों ने भर्ती शुरू करी। चाहे आज़ादी के बाद का इतिहास हो, 1947-48 में कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण को रोकते हुए रेजांगला 1962 रेजांगला की लड़ाई में 120 अहीर सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों से मोर्चा संभाला और चुशुल एयरपोर्ट को दुश्मन के कब्जे से बचाने का काम किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो, 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो या कारगिल की बात हो, अनेकों परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र अर्जित अहीर भाइयों ने किए। तो मेरा आपसे मांग है, जब जब देश पे कोई हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जय 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 यादव जय माधव का नारा गूंजा। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। मैं स्वयं आखिर में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं, मेरा भी इलाका पड़ता है, मैं 17 साल से सांसद हूं, शायद ही कोई महीना ऐसा ना जाता हो कि बॉर्डर से कोई डेड बॉडी, कोई शहीद की डेड बॉडी वापस ना आती हो और शहीद की प्रतिमा। टाइम हो गया, टाइम हो गया। राइट, थैंक यू। श्री प्लीज कमेंट नहीं करना, किसी को जोड़ना है तो नाम भेज दीजिए, नाम जरूर जोड़ेंगे। ये श्री शक्ति सिंह गो है। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। मैं एक बहुत ही दर्दनाक घटना जो दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में घटी, उस विषय को सदन के सामने रखना चाहता हूं। महोदय, दिल्ली के उस गोकुलपुरी एरिया के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उस गरीब परिवार के वहां आग लगी और 7 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग उस दर्दनाक हादसे में काफ़ी इंजरीज भी उनको हुई। एक वक्त था और जिस पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए फ्लैट्स दिए जाते थे, पूरे मुफ्त में फ्लैट्स, क्योंकि गरीब लोग, बहुत ही गरीब लोग वहाँ रहते, तो पूरे मुफ्त में वहाँ उनको फ्लैट दे के शिफ्ट किया जाता था। मैं आपके ज़रिए सरकार को अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी जो गरीब बस्ती में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए जो पुरानी स्कीम थी उसको बदल के पहले झुग्गी खाली करो, 35,000 रुपया पहले भरो, एफिडेविट दो और बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपया भरो। वो गरीब के लिए ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो पुरानी
परंपरा थी कि मुफ्त में उस गरीब झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले को फ्लैट दिया जाता था, वो करना चाहिए। और महोदय, एक छोटी सी एक और गुजारिश भी है, क्योंकि दिल्ली के कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर उन झुग्गी में आग लगी तो फायर ब्रिगेड भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो उनके इंतजाम रखें कि आग लगे ही नहीं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके लिए इंतजाम हो और गरीब लोगों के लिए व्यवस्था हो। धन्यवाद महोदय। राइट सिंह जी, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट इज हियर, यू टेक नोट। श्री सुरेश गोपी, श्री सुरेश गोपी नॉट देयर, राइट। श्री ईरन्ना कवारी, ईरन्ना जी नहीं है, राइट। श्री GVL नरसिम्हा Telugu. Yes, sir. Sir, my 0-hour submission is about 550th birth anniversary celebrations of legendary Emperor Sri Krishna Devaraya of Vijayanagara Empire. I would like to, I've read out the title in English, sir, so that our friends can understand. Krishna Devarayalu peru teliyani భారతీయులు ఎవరు ఉండరు. శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలి విశిష్టతని తెలియని వారు కూడా చాలా అరుదుగా ఉంటారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవర్తిగా 1509 నుంచి 1529వ సంవత్సరం వరకు పరిపాలించిన 20 సంవత్సరాల్ని భారత చరిత్రలో స్వర్ణయుగంగా పేర్కొంటారు. ఈ 75వ సంవత్సరం మనం ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా అటువంటి విశిష్టత కలిగినటువంటి గొప్ప చక్రవర్తిని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం, వారి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉన్నది. తెలుగు భాష ఈ రోజుకి ఒక గొప్ప క్లాసికల్ భాషలా నిలబడిందంటే దానిలో ఖచ్చితంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి స్వయంగా చేసినటువంటి కృషి ఎంతో ఔన్నత్యమైనది. అముక్త మాల్యద వంటి ఒక గొప్ప కావ్యాలని రచించినటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు ఆయన సమయంలోనే తెలుగు భాష పెంపొందించడానికి మరి అనేక మంది కవులని ప్రోత్సహించారు. అలాగే తెలుగు భాషనే కాకుండా హిందూ ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం, వేదిక ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం కృష్ణదేవరాయలు గారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వందలాది ఆలయాల నిర్మాణానికి విశిష్టమైనటువంటి విరాళాలు ఇచ్చి ఈరోజు కూడా హిందూ ధర్మం నిలబడేలా చేసినటువంటి ఒక గొప్ప మహనీయుడు. సో కాబట్టి అటువంటి మహనీయుడు ఆయన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. 1471వ సంవత్సరంలో జన్మించినటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు జన్మించి ఇప్పటికి 550 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రభుత్వం వారిని ఖచ్చితంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు, విశిష్ట కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని, మ్యూజియంని అలాగే ఒక ప్రత్యేక స్టాచ్యూని కృష్ణదేవరాయలు గారిని గుర్తుంచుకోవటం కోసం నిర్మించాలని, వారిపై పుస్తకాలు, సినిమాలు, టెలివిజన్ సీరియల్స్ లాంటివి కూడా నిర్మించి ప్రపంచానికి కూడా కృష్ణదేవరాయలు గారి విశిష్టతని, ఆయన తెలుగు భాషకి, తెలుగు నాడుకి, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పూర్తిగా మరి హిందూ సంస్కృతి నిలబెట్టడానికి ఆయన చేసిన విశిష్ట కృషిని గుర్తించాలని ప్రభుత్వం మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను చైర్మన్ సార్. థాంక్యూ సార్. Gist of his submission is he want the government to celebrate 550th birth anniversary of the great King Sri Krishna Devaraya, who has given importance to culture, arts and also languages like Telugu, Tulu, Kannada and all this. That's his submission. DP what's up? You came late. Sir, I regret for that. Right. सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मेडिकल टीचर्स की एक्यूट शॉर्टेज की तरफ नेशनल मेडिकल कमीशन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. फैकल्टी, फैसिलिटी एंड क्लिनिकल वर्कलोड मेडिकल एजुकेशन के स्तंभ हैं. उसमें मेडिकल टीचर्स की भारी कमी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार का प्रयास चल रहा है. ऊपर से यूक्रेन से जो इवैक्यूएशन हुई है मेडिकल स्टूडेंट्स की, उनके लिए भी एडजस्ट करने की डिमांड उठी है. ऐसे हालात में हमें आउट ऑफ बॉक्स
सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन मेडिकल टीचर्स, पार्ट टाइम मेडिकल टीचर्स, गेस्ट फैकल्टी और जो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल टीचर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम मेडिकल एजुकेशन की डिमांड को हेड ऑन मीट कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू। So special mentions Sri Mahesh Poddar. Thank you, sir. Sir, the National Disaster Management Act 2005 has been in force since the start of pandemic. The Act has a provision of constituting Disaster Management Authority at national, state and district level, whose members are nominated by the chairpersons of the respective authorities. Sir, currently there is no woman representative in this authority at the national level, and in this regard, I would request the government to make necessary provision to include at least one woman in this authority. Thank you, sir. Thank you, Mahesh ji. Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Chairman, sir, for permitting me with the subject line, Rehabilitation of Women BD Workers. Sir, the BD industry in India is unorganized, unregulated, unchecked, and it poses a significant health risk to the workers employed in the BD rolling process. According to the Labour Ministry's annual report 2020-21, there are 50 lakh registered BD workers in India, and majority of them are women. These women work in unhygienic conditions and causing health deterioration in the form of exacerbation of tuberculosis, asthma, anemia, giddiness, postural and eye problems, and this puts them at risk of developing cancers of the lungs and thorax. It has been found that women BD workers are unaware of their rights, which makes them vulnerable to low wage rates, systemic exploitation, lack of social security, and limited access to various welfare schemes. The rehabilitation efforts of the government also had a low impact, with only 2,746 beneficiaries being provided placement in alternative jobs as of 31st December 2019. It is important to rehabilitate more women on urgent basis. The government must play a more responsive role and shift these women BD workers to more rewarding alternative livelihoods. There is a need to organize these women into self-help groups and establish linkages with banks and civil society institutions. The Ministry of Labour and Employment must conduct a study to understand the reasons for the low penetration of the support given to women BD workers and reorient their policy approach accordingly. Thank you very much, sir. Thank you, Manoj ji. Dr. Prashant Nanda. Thank you, Chairman, sir. The topic of my special mention is delayed release of food subsidy by Government of India. Government and state procuring agencies with regard to permissible items of cost for procurement of rice to be borne by Government of India. The anticipated cost is required to be released in the form of advance subsidy at the rate of 90% of admissible claim on quantity basis in the first month of every quarter. Further, the state government, Odisha State Civil Supplies Corporation, the state agency responsible for procurement, shall be paid quarterly provisional subsidy after deduction of the advanced amount. However, the release of advance and provisional subsidy is irregular. Odisha State Civil Supplies Corporation, the major procuring agency of the state government, is to receive rupees 9,317.25 crore as provisional subsidy and advance subsidy of rupees 2,400.33 crores, with the total subsidy claim standing at rupees 11,717.58 crore. The additional interest incurred till 31/12/2021 cumulatively because of delay in release and short release of subsidy comes to around rupees 5,402.61 crore, which remains unrecouped. I hereby draw the attention of the concerned minister for the early release of funds. Thank you, Prashant ji. Srimati Vandana Chauhan, please one.
Sorry. Sir, my special mention is in respect of urgent need to demarcate eco-sensitive zone of the Western Ghats. So the Western Ghats are a globally biodiversity hotspot, a UNESCO World Heritage Site, and an important geological ecosystem that needs urgent conservation. Home to over 325 globally threatened species, the Ghats spread over 160,000 square kilometers, containing 50% of India's endemic amphibians, were responsible for influencing the southwest monsoons and contain catchment area draining 40% of the country. In recent years, alarming loss of forest cover and biodiversity has been recorded. Despite two committee recommendations, the Gadgil Report 2011 declaring the entire Western Ghat as ecologically sensitive and the Kasturi Ranjan Report 2014 recommending a reduced area of 56,825 square kilometers, no action has been taken on either of the reports. The NGT order mandating that the Western Ghats be declared ecologically sensitive by December 2020 has also been ignored. Presently, developmental activities like roads, railway projects, plantations, and increasing urbanization continue unabated. Many forested private lands have been converted into housing complexes and resorts. Landslides have increased due to soil erosion. Infrastructure projects in sensitive areas of the Western Ghats, such as the Hubli-Akola Railways, Mikadatu Project, Indian Neutrino Observatory, and the Kaiga Atomic Plant's expansion, are predicted to incur heavy losses to wildlife and biodiversity. Rivers like Kaveri, Godavari, and Tapi, considered the lifeline of the region, are drying up despite normal monsoon. States need to build consensus to urgently demarcate the Western Ghats eco-sensitive zones, and the center needs to make this happen. Delay to address the destruction of Western Ghats would exacerbate environmental catastrophes and lead to irreversible biodiversity loss. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Srimati Priyanka Chaturvedi. Thank you, Honorable Chairman, sir. The subject is approval of an additional 8155 Anganwadi Center and 49 child development projects in Maharashtra. I am raising a matter regarding the approval of an additional 8155 Anganwadi Center and 49 child development projects in the state of Maharashtra. The issue has been pending with the ministry since 2016. Anganwadi centers serve as the nodal agency for basic services under Integrated Child Development Services, that is nutrition, health and preschool education. These centers provide affordable and accessible healthcare, aid in community mobilization, and are integral for eradicating malnourishment. As per National Family Health Survey 4 and NFHS 5, which is 2019-21, the prevalence of anemia and obesity or overweight has increased across all age groups. Hence, the importance of the Anganwadi centers is paramount. It is highly unfortunate that the matter regarding the approval of Anganwadi centers and child development projects has been pending since 2016. A reminder letter was sent to the Women and Child Development in 2019, but no action has been taken in this regard. The proposal is still pending with the ministry for further approval. Therefore, through this House, sir, and through you, sir, I urge the government to consider and approve the aforesaid proposal and reply to the Maharashtra government at the earliest. Thank you, sir. Sri Abir Ranjan Biswas. Sir. So my special mention is on need for parliamentary scrutiny on the policy regarding mining in no-go areas. In 2010, a study was done by Forest Survey of India that laid down certain parameters to determine whether areas should be open to mining or not. Some areas were recognized as no-go areas and any clearances granted to them were revoked. This policy was never notified officially but followed de facto. However, the policy was eventually diluted and then abandoned entirely. The current situation is that there is a lack of a policy to determine which of the earlier designated no-go areas may or may not be mined. Some areas are recommended for mining on an executive level via office memoranda. Ministries coordinate among themselves. However, the clearance process keeps getting delayed even after the coal blocks have been auctioned. This delay proves harmful for the forest because the mining companies who win the auctions work to illegally dilute the forest density or acquire
forest land and designate it as private land. Due to the environmental clearances being regulated via office memoranda, parliamentary scrutiny is completely skipped. This should ideally happen through acts or rules, and the same should be laid before the parliament. There is a need for central government to provide a clear policy regarding mining in no-go areas. The policy should be brought as an act or rules and should be subjected to parliamentary scrutiny. Further, the ministry should provide the allocation policy for projects in no-go areas and the procedure for clearances of the allocated blocks. Thank you, sir. Dr. Fauzia Khan, you want to speak in Marathi? सर, पहिल्या राष्ट्रीय लॉकडाऊनपासून प्रवाशांसाठी जवळपास सर्व रेल्वे सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. परंतु काही सेवा प्रवाशांना पूर्ववत करूनही पुरुष ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रवास तिकीट भाड्यात 40% सवलत, महिला ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50% सवलत, तसेच 12 वर्षाखालील मुलांचीही सवलत थांबवण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईच्या दबावाच्या वातावरणात आम्ही नम्रपणे विनंती करतो की सर्व सवलती सुविधा पुनर्सचित करावे आणि हजारो प्रवाशांना उपकृत करावे. सर, रेल्वेतून प्रवास करणे हा अर्ध्याहून अधिक नागरिकांचा अविभाज्य भाग असल्याने सवलत पुनर्सचित केल्याने या पैशाच्या तुटवड्याचा भार कमी होईल अशी मी विनंती करते. सर, Right. He wants that concessions given to senior citizens and women and the children should be restored to pre-COVID levels. There is a message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 14th March 2022 passed 1. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2022, 2. The Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2022, 3. The Appropriation Number 2 Bill 2022, and 4. The Appropriation Number 3 Bill 2022. The Speaker has certified that these bills are money bills within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy each of the said bills on the table. श्री वीरन्ना दादाजी, वीरन्ना जी, आप देर आए. सुन रहे? धन्यवाद सभापति महोदय. मैंने जो कहा आपको समझ में आया? आप जब मैंने आपका नाम बुलाया आप सदन में नहीं था. हाँ सर. देर आए. ऐसा नहीं करना आगे. हम बड़ी बताइए. सॉरी सर, सॉरी. धन्यवाद सभापति महोदय. कर्नाटक का वीर संगोली रायण्ण की जन्मभूमि है. जो स्वतंत्र सेनानी एवं योद्धा थे, संगोली रायण्ण कित्तूर साम्राज्य की रानी चन्नम्मा के सेना प्रमुख थे और 1824 में अंग्रेजी के खिलाफ विद्रोह किया था. भारत माता की रक्षा करते हुए संगोली रायण्ण ने आपके प्राणों के देश के लिए समर्पित किया. संगोली रायण्ण के सम्मान में कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्र सेनानियों के लिए संगोली रायण्ण पुरस्कार की स्थापना भी की हुई और उनके व्यक्तित्व और शौर्य को आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने 230 करोड़ की लागत से बेलगाम जिले संगोली गांव में 100 एकड़ में सैनिक विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें छात्रावास और अन्य सुविधाओं के भी प्रावधान होगा. संगोली गांव में सैनिक विद्यालय की स्थापना से यहां के बच्चों की अच्छी शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वो भविष्य में थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अपनी सहयोग देने के लिए प्रेरित होंगे और संगोली रायण्ण के जीवन से प्रभावित होकर देश की रक्षा और विकास के लिए काम करने के उन्हें प्रेरित मिलेंगे. बेलगाम जिला महाराष्ट्र और गोवा राज्यों की सीमा पर स्थित है और इस विद्यालय की स्थापना से महाराष्ट्र और गोवा से भी बच्चों इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे.
जिससे उनका समग्र विकास होगा और संगोली रायन्ना के शौर्य और पराक्रम को सम्मानित करने के लिए इस विद्यालय का नाम वीर संगोली रायन्ना सैनिक विद्यालय रखा जाए। सरकार से निवेदन है कि बेलगाम के संगोली गांव में कर्नाटक सरकार द्वारा सैनिक विद्यालय का निर्माण का कार्य पूरा होने पर इसके संचालन का दायित्व रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जाए और इसे पूरे देश में एक आदर्श सैनिक विद्यालय की तरह विकसित किया जाए, यह मेरी सरकार से मांग है। धन्यवाद सर। Right. John Britas is there? No. Mr. M. Shanmugam? Shanmugam ji, this is about a need to transfer reserve fund for capital expenditure and revise wages of BSNL employees. Thank you, sir. Sir, I would like to raise the issue of the BSNL. When BSNL was created in the group of ministers meeting, it was decided that the reserve fund of DOT that was earned during the past period due to sweat and toil of the workers would be transferred to the BSNL for development and modernization. However, the fund was transferred. Most of the BSNL employees have taken VRS since there was a criticism that the company has more manpower. But still salary is not being paid in the existing employees. This government is written off NPAs and loans corporate companies, but it is not prepared to help its own public sector undertaking. No capital expenditure is provided in the maintenance of running of the tower and generators or battery. Though the workers are motivated and performing dedicated service in the general public, due to the starvation of funds, many services like broadband internet are affected. When the workers were transferred from Department of Telecom to BSNL in 2000, you have to conclude. Demand. What is your demand? It was assured that that pension should be revised every year, but the government is not taken any financial support to the BSNL, as well as revision of wages to the employees and revision of pension to the retired employees also. Thank you. Thanking you, Sri Vanada Vena. Mizoram. Not there? Vanada Vena ji. This is about a demand to reopen 3 regional offices of the Food Corporation of India. The state of Mizoram, Tripura and Meghalaya. Yes, sure. Veeravar. They are not ready. Okay. Thank you, sir. Sure. Yes. Yeah, I want to speak about. Okay, you can read. Yeah. Whenever I exhaust the names that have been approved, then I go to the remaining names. You may not be aware of this, but afterwards that will be changed. Anyhow, I read out your notice. Okay. So, opening of Regional Office of Food Corporation of India in the states of Mizoram, Tripura and Meghalaya. Okay. Yes. I have told you also yesterday, I am reminding again, whenever the approved list is exhausted, then the other names who have given notice, if time is available, they will be called. Accordingly, I have called you. You have not given me an opportunity today. I have given an opportunity, but it could not happen. I will give you an opportunity. And I have already given you one opportunity. You cannot have 2 opportunities same day because others are waiting. Sri Britas, you want to? Only 30 seconds you have. Sir, the EPF rate which has been reduced may be reinstated. That is my demand. And the government has done a very bad thing to the workers. Millions of people are being affected, and I would request the government to reinstate the rate. Thank you. Question number 136. 136. Fauzia Khan. So question number 136.
Minister. Table the House. Supplementary, please. Where is the Deputy Chairman? सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका जो रिप्लाई आपने मुझे दिया है, इसमें कहा है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस टू ऑल विलिंग अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो क्या विलिंग हाउस होल्ड्स के लिए अगर है तो अनविलिंग जो है उनको नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ा प्रमाण है जहां लोग आंकड़े डालकर बिजली के कनेक्शंस लेते हैं इलीगली सर, और जिन घरों तक ग्रिड लाइंस पहुंचना फीजिबल नहीं है उनके लिए क्या प्रावधान है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, हम लोग कनेक्शन तो उन्हीं को दे सकते हैं जो कि कनेक्शन लेने के लिए इच्छुक हो। माननीय सदस्य का यह कहना है कि कुछ लोग जो चोरी कर रहे हैं वो नहीं लेना चाहेंगे, ये बिल्कुल सत्य है और इसके लिए हम लोगों ने उपाय भी किया है। हम लोगों ने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि जहां अधिक चोरी हो रही है वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एरियल बंच केबल्स आता है जिसमें कि हुकिंग संभव नहीं है। हमने कहा कि फंडिंग हम करते हैं, आप वहां एरियल बंच केबल्स लगा दें तो चोरी बंद हो जाएगी। बहुत सारे राज्यों में जहां पर ये हो रहा था उन्होंने एरियल बंच केबल्स लगाए या हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाया तो चोरी बंद हो गई। तो सभी घर सामने आए कि हमको भी आप विद्युत कनेक्शन दे दीजिए। तो पहला तो सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य का यह था। दूसरा सप्लीमेंट्री था ऐसे घर को कैसे हम लोग कनेक्शन देते हैं जहां पर कि ग्रिड पहुंचाना ये संभव नहीं है या बहुत दूर है, तो उनको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्शन देते हैं और इसके लिए भी हमारा प्रावधान था और इसके लिए भी हम लोगों ने कनेक्शन दिया। जहां जहां जरूरत था वहां हमने कनेक्शन दिया। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजी। मंत्री महोदय, क्या इस योजना के द्वारा ये विचार किया जा सकता है कि जो लोग अनधिकृत तौर पर बिजली से चोरी कर रहे हैं उन्हें अधिकृत किया जाए और उनसे बिल वसूल किया जाए? और क्या मुफ्त कनेक्शन के साथ मुफ्त बिजली भी प्रोवाइड करने का कोई प्रावधान है? अध्यक्ष महोदय, ये मुफ्त कनेक्शन के साथ मुफ्त बिजली प्रोवाइड करने का कोई भी प्रावधान नहीं है और ये मुफ्त कनेक्शन भी उन्हीं घरों को दिया जाना है सौभाग्य योजना के अंतर्गत। वैसे घर जो कि सौभाग्य योजना जिस समय स्वीकृत हुआ उस समय बने हुए थे, क्योंकि घरें तो निरंतर बनती रहती, हर साल नए घर बनते हैं। तो हम लोगों ने यह तय किया था कि उस तारीख को, जिस तारीख को कि सौभाग्य योजना स्वीकृत हुई, उस तारीख को जितने भी घर विद्यमान हैं उनको हम कनेक्शन दे देंगे। और जहां तक कि जो चोरी कर रहे हैं उनको कनेक्शन देने की बात है तो उनको कनेक्शन के लिए वो आगे तभी आएंगे जबकि उनकी चोरी बंद कर दी जाए। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का परामर्श हमने राज्यों को दिया था और ये रेड्स वगैरह करने का भी परामर्श दिया था। तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर कि लोग पहले बिजली कनेक्शन नहीं लेना चाहते थे, बाद में इच्छुक हो गए जबकि चोरी देखे कि कठिन हो गई। श्री जुगल सिंह लोखंडवाला जी। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जो लास्ट में छोरे पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ऐसी दिक्कत रहती है, बिजली नहीं पहुँच पाती, तो क्या उसका सोलर या कोई और माध्यम है जहाँ बिजली पहुँचाने के लिए उनको आप दे सकते हैं? क्या किस तरह दे सकते हैं, मुझे जवाब देंगे माननीय मंत्री से? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर कि ये ग्रिड नहीं पहुँच पाया या पहुँचाने में ज़्यादा खर्चा होगा और घरों की संख्या कम है, वहाँ पर हम लोगों ने सोलर के माध्यम से कनेक्शन दिया और कुल जो हम लोगों ने 2,86,00,000 घरों को हमने कनेक्शन दिया। उसमें से ऑफ ग्रिड भी हम लोगों ने काफ़ी ये घरों को कनेक्शन दिया। कुल मिलाकर के हमको लगता है कि ऑफ ग्रिड भी कुछ हम लोग 4,16,469 घरों को हम लोगों ने ऑफ ग्रिड माध्यम से यानी कि स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम से हम लोगों ने कनेक्शन दिया और सभी राज्यों से हमने सर्टिफिकेट लिया कि उनके सभी घर विद्युतीकृत हो गए। आइए सर्टिफिकेट हमारे पास है। डॉक्टर वी शिवदासन जी। डॉक्टर वी शिवदासन, क्वेश्चन नंबर 137 मानिज। अच्छा प्लीज।
Sir, I endorsed the next one, 136. No, you have put your 136. So ask your supplementary on this. Next one I am. You are not interested in asking on this. Mani Revati Raman Singh ji. I have written. You mistakenly written 136, that is. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो आपने विद्युतीकरण कराया है, बहुत से गांव या घर छूट गए हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, तो क्या आप सर्वे करा के समयबद्ध तरीके से उन जगहों पर जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसको कराने की कृपा करेंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने सभी, जैसे कि हमने बताया, हमने सभी राज्यों से सर्टिफिकेट लिया कि उनके हर घर कनेक्ट हो गए कि नहीं, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हर घर कनेक्ट हो जाए। और माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से हमें 31 दिसंबर 2018 को सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया कि उनके हर घर कनेक्ट हो गए। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने कहा, तो उस समय उन्होंने कनेक्शन दिया था 79,80,568 घरों को। उसके बाद पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र भेजा कि करीब 12 लाख घर बच गए हैं, 12-13 लाख घर बच गए हैं, तो उनको और कनेक्शन देना है। उसको भी हमने स्वीकृत कर दिया दूसरी बार, तो उसको भी कनेक्शन दिया गया। और उसके बाद पुनः यो कनेक्शन हो गया। उसके बाद पुनः उत्तर प्रदेश ने पुनः पत्र भेजा कि हमारे 13,07,021 घर अभी भी छूट गए हैं, जिनको नहीं, हमारे 3,34,652 घर अभी भी छूट गए हैं, उनको कनेक्शन देने की अनुमति दी जाए, तो फिर उसको भी हमने सैंक्शन कर दिया। तो जो, और इसके बाद फिर ये अब ये अंतिम है, क्योंकि 31 मार्च को हमारा योजना समाप्त हो जाएगा, तो हमने टाइम दिया। ये सैंक्शन हमने किया 13 जुलाई 2021 को, और 31 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फंडिंग नहीं दे पाएंगे, ये भी राज्य सरकार को हमने बता दिया। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 137, माननीय YS चौधरी जी। माननीय मंत्री, फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्लीज। Sir, the GST compensation for the years 2021 and for the current year 21-22 yet to be paid to various states, while the GST collection is showing upward trend. Particularly in the state of Andhra Pradesh, even reply says that about 1,524 crores are yet to be released. So my question to, supplementary question to the Honorable Minister is, by when the amount will be transferred? माननीय मंत्री जी। जनवरी और 22 तक की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को 1524 करोड़ रुपए और तेलंगाना को 308 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति अभी जारी की जानी बाकी है। कुल मिलाकर सभी राज्यों का यूटी का 53,661 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति अभी जारी की जानी है, जिसे देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसको बहुत जल्द भुगतान कर देंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, I am glad that Minister generally have been committed to support all these states about the GST compensation. But in general, particularly because of the pandemic, there is every state have been trailing behind about their recovery and collection. So, is there any proposal from central government that the GST compensation may be extended for another 5 years, though originally committed only for 5 years? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 8 के तहत जीएसटी की उपकर भारत के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स का हिस्सा है। जीएसटी लागू होने के लिए राज्यों को जीएसटी अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार केवल 5 वर्षों के लिए ही क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। हमारी सरकार राज्यों को 2022 का कंपनसेशन देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कोविड काल में
कम जीएसटी कलेक्शन, सेस कलेक्शन कम होने के नाते जो प्रदेशों पे संकट पड़ी थी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उस समय भी हमने लोन लेकर के क्रमशः 1,10,000 करोड़, 1,69,000 करोड़, 2,70,000 करोड़ रुपया लेकर के कहीं ना कहीं लोन के रूप में उस सरकारों की मदद करने का काम किया है। माननीय वंदना चौहान जी। The state of Maharashtra generates the highest revenue to the kitty of our country. However, in this table which has been appended as annexure to the reply, we see that the maximum figure which seeks compensation yet to be released is for the state of Maharashtra, which is a whopping 11,563 crores. Sir, and another observation that the states of Andhra Pradesh, Delhi, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, all non-BJP states have this kind of a figure. So what is the prayojan kya hai ministry ka ki ye kyun ho raha hai, and why isn't this 11,500 not released? Thank you, sir. Maybe politically dekhte ho. माननीय मंत्री। सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि भारत सरकार 2022 तक प्रतिपूर्ति देने के लिए कटिबद्ध है और निश्चित तौर से महाराष्ट्र का भी जो बकाया है उसको भी देने का काम करें। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। प्लीज माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। ऑनरेबल FM wants to reply, please. Vandana Chavan has raised this question. Unfortunately, I've sought your permission to say that the council is a body which decides on how this works out, how the disbursements happen. There is a given formula which has been in place since the time GST has been implemented. And even the way in which the back-to-back loan has been taken and distributed by the center but through the public account is also something which the GST Council has deliberated in not just one but 3 council meetings. It's very well to point out that Maharashtra has a very big amount due. But the 2 other columns will also say that in the distribution as well, the share of Maharashtra has, as per the formula, no discretion, been fairly higher compared to the other states. I humbly submit an appeal through you that for a body like GST Council, in which every finance minister from every state sits in and takes a call, it's a collective decision of the GST Council, and I appeal through you that we don't need to politicize this. No individual has the right to tweak the formulation, and therefore there's no differentiation made on the basis of this party or that party. It's an insult to the GST Council, which is a federal body in which every state has its own finance minister sitting and deliberating. So I would humbly appeal through you, sir, that we do not politicize this distribution. Thank you. माननीय भुवनेश्वर कलिता जी, प्लीज। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी, प्लीज सीट पर बैठ करना बोले, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। Sir, again, sir. Areas is there given by state. There is no differentiation and it goes per the formula given. Please, seat पर बैठ करना बोले, please. And the areas are there. माननीय, प्लीज सीट पर बैठ करना बोले, माननीय, प्लीज। The money paid is माननीय also मंत्री जी higher का for बयान the रिकॉर्ड state, पे जाए, sir. प्लीज। The amount given for 22, amount given for 21-22, all this is determined per a formula. And the amount paid also as back-to-back for these states which have been named by honorable member is higher than the other states. Would they want to recognize that? Thank you. माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Honorable Minister has mentioned about that the GST Council is constituted of all the states, and I want to, and from time to time it holds its meeting, and I want to refer to one meeting, the 43rd GST Council meeting, whether it is a fact that Council, the group of ministers has taken decision on capacity-based taxation and
special composition scheme in certain sectors in GST constituted before 43rd GST Council meeting to examine the possibility to levy of GST based on the capacity manufacturing unit and special composition schemes please be brief in your question. Please be brief. Prone sector. Put your question. That is my question. Please. That is my question, sir. I want to know from the minister. Please. निश्चित तौर से सरकार ने बहुत सी कदम उठाए कि जिससे जीएसटी कलेक्शन का बढ़ोतरी हो। हमारी सरकार जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें प्रमुख है कि कर अनुपालन कंप्लायंस में सुधार के लिए जीएसटी दरों को सरल करना, ई चालान सिस्टम लाना, अनिवार्य ई फाइलिंग करना, करों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, लेट भुगतान पर जुर्माना का प्रावधान, वेरिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी सोर्सेज का उपयोग, टैक्स पेयर को शिक्षित करना और मीडिया अभियान चला करके इसके अतिरिक्त ट्रांजिट में वस्तुओं की आकस्मिक जांच के लिए ई-वे बिल स्क्वाड के लिए सक्रिय भी किया जाता है ताकि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो पाए। माननीय जवाहर सरकार जी, प्लीज नो, माननीय जवाहर सरकार जी, प्लीज 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 प्लीज, माननीय जवाहर सरकार जी। Sir, thank you. I would like to ask the Honourable Minister, whoever chooses to reply, that you have mentioned that the compensation cess will go on beyond 5 years. Now, we have been demanding this for a long time. We'd like to know more specifically how many years. Would you like? Thank you. Thank you. And the one about everything. Thank you. You have put your one question, Jawahar. Please. क्षतिपूर्ति पे उपकर का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने लिया है और निश्चित तौर से जीएसटी काउंसिल में निर्णय हुआ कि 2022 से 5 साल के लिए 27 तक उपकर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, माननीय श्री KRN राजेश कुमार, अच्छा प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज पुट योर फर्स्ट सप्लीमेंट्री, मिस्टर राजेश कुमार। Honorable respected Deputy Chairman sir, Kollimalai Hills, Namakkal district, Tamil Nadu is one of the most traditional place for cultivation of the medicinal plant and a lot of historical reference are there for the same. We have product the medicinal plant in Kollimalai Hills. As per Honorable Minister has replied at present, one Siddha medicinal plant garden in functioning in Mettur in Tamil Nadu under the Central Council for Research in Siddha since 2004. It is engaged in the maintenance of and development of herbal garden and the cultivation of medicinal plant. It is situated at around 125 kilometers away from Kollimalai Hills. In the Honorable Minister reply, he said there is no such proposal to set up the Siddha Medical Research Center. But I am requesting the Minister to consider setting up of a Siddha Medicinal Plant Garden Extension Center in Kollimalai Hills from the Mettur Please be brief. Because there are much more medicinal plants in Kollimalai Hills. The district administration and the state government are ready to provide land for setting up the extension center. Will the Minister of AajTak reconsider the establishing FBMG Kollimalai Hills? Please be specific in your questions. Please. Honorable Minister. Respected Deputy Chairman, sir. Honorable member has rightly raised this important issue before this august house. Kollimalai Hills in Tamil Nadu is famous for exotic medicinal plant, and these medicinal plants are collected to develop Siddha medicine. So, considering the potentialities, Ministry of Ayush, Government of India has already taken a lot of initiative by setting up of the institution like Central Council for Research in Siddha, functioning in Tamil Nadu, and with 3 peripheral institutes, Siddha Central Research Institute, Chennai, Siddha Clinical Research Unit, Government of Siddha Medical College Campus, Palayam, Kottai, and
Siddha Medical Plant Garden, Mettur Dam, Tamil Nadu. A National Institute of Siddha under the Ministry of Ayush is also situated in Chennai. So all these institutions are day and night working with commitment and sensibility with the support of the people of Tamil Nadu. I must mention the initiative taken by the government of Tamil Nadu is very, very praiseworthy. During the COVID-19 pandemic, they have distributed 1 crore 80 lakhs Kabasura Kudiner, which is based on the Siddha system of medicine among the people of Tamil Nadu, and which has given a lot of relief from this pandemic situation to the citizen. So, considering your expectation, I can simply tell you that I am also interested to pay a visit to these hills, beautiful hills. Thank you. To that extent, I can make you promise. Thank you. Second supplementary. Mani Rajesh, be brief in your question. Please. Okay. The Honorable Deputy Chairman, sir. Please be I brief. want direct answer. Others will get opportunity also. Please. Okay, sir. I want direct answer. I kindly request to the Honorable Minister, one extension center in Kollimalai Hills for the Siddha medical plant. Thank you. Then, what the, and next You have already second put your supplementary question, what is the total allocation made to the Central Council for the research in Siddha for Siddha plant cultivation during the last 3 years? Whether the CCRS has utilized the allocation fully? Thank you. If not, the reason therefore. Thank you. Thank you, Rajesh. Sir, the Ministry of Ayush is trying to develop all system of medicine that is involved in the Ayush family. So, regarding the support, we have been extending our support as per the proposal sent by the respective institution. And in this regard, as you know, that all system of Ayush now will be taken as center stage in the global scenario. You have all come to know WHO has decided to set up a global center for traditional medicine, and that is why now all the system will move together to establish its strength with all scientific evidences and ability before the eyes of the globe, before the people of the globe. So now, as WHO has set up, this is the first and only institution in the country, that is Global Center for Traditional Medicine. Now this is an opportunity for the people of the country who have been there in this particular system for decades together, and this will definitely empower our traditional practitioner to demonstrate their ability before the global society. Thank you. Thank you. Mani Dr. M. Thambi Durai ji, today's birthday of Dr. M. Thambi Durai ji. Okay. Many happy returns to Sri Honorable Thambi Durai ji. We all wish you happy birthday. Janmdin ki bahut shubhkamnaएं हम सब की ओर से. Please put your question. And also other members can blessing me with the blessings. I can serve more. Thank you very much. Yes. Sir, just I want to know from our Honorable Minister. So I know very well that central government is extending a lot of efforts to develop the Ayush. Especially in Tamil Nadu, they are established 3 research centers on Siddha. But the same Siddha is the very famous and also very traditional thing, ancient thing, which has given a lot of
relief for the people, Indian system. But now that is the standard is slowly going down, what I learned, sir. Therefore, I request the Honorable Minister, not only establishing 3 institutes like this research, let him have more centers like Kollimalai and other places. Then it will give very boost. Whether the Minister will come forward to establish more research centers on these Siddha systems. Honorable Sir, the Honorable Member has expressed his concern about the development of Siddha system of medicine in the country, and that is why he is asking more and more institutions to set up throughout the state of Tamil Nadu. For his information, so far 8 peripheral institutions throughout the country is now functioning. Like we have Siddha Central Research Institute, Chennai, then Siddha Regional Research Institute at Padusiri, Siddha Regional Research Institute in Thiruvananthapuram, Siddha Clinical Research Unit in Palai-Katai, Siddha Medicinal Plant Garden, Mettur, Siddha Clinical Research Unit, New Delhi, Siddha Clinical Research Unit, Bangalore, Siddha Clinical Research Institute, Tirupati. So this is the way. Gradually it is growing up, and I believe definitely considering the importance of this particular system of medicine, and out of this medicine, this particular system has proved its like particularly importance to the prevention of diseases and also preservation of human health. So that is why I am confident that whatever honorable member is expecting from us, this is the demanding situation, and I could particularly assure this house, you must appreciate. Please be brief in your answer. Please. You must appreciate why. Please. No, Please. listen. Not allow Mr. Rajesh Listen to questions. me. Listen to me, please. Please be Listen to brief. me. Listen to me. Honorable Minister, please be brief. So, and I want to be brief because the importance, how importance is growing up. This must be realized by the August House. All questions are important. Please let us move to other. Okay. Please. So that is why. Please. Sir. No. Please be brief. Honorable Minister. Honorable Minister, please be brief. Honorable Minister. So, please brief. I will move to other. Please. Sir, I could assure the हाँ बोले आपकी बात because this is definitely growing situation, and this particular matter will be definitely examined. Thank you. माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी. प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी. मैं जानता हूँ ये ऑन नहीं हो रहा है. श्रीमान सिद्धा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ही है, और आपको आश्चर्य होगा कि सरकारें इतनी उदासीन हैं इस मंत्रालय की तरफ, इन सारी पैथी जो इनकी तरफ. ये पूरे आयुष मंत्रालय का बजट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से कम है, इतना भी नहीं होता है. तो प्रश्न ये उठता है कि इतने कम बजट के साथ न तो आप नई संस्थाएं खोल सकते हैं, और आपका मंत्रालय मांगता भी है तब भी बजट में वो पैसा दिया नहीं जाता है. तो कैसे आप रखाएंगे ये सारी मेडिसिनल, जो चाहे वो तमिलनाडु के हिल्स की हों, चाहे केरला में पाई जाती हों, चाहे उत्तराखंड में, ये स्मगल होकर देश से बाहर जा रही हैं. इनकी जानकारी है या नहीं मंत्री जी, वो बताएं. उनको रोकने के लिए क्या काम कर रहे हैं, और इन सारे मेडिसिनल प्लांट से जो दवाइयाँ बन सकती हैं उनके लिए आप क्या तौर तरीका अख्तियार करने जा रहे हैं. रेस्पेक्टेड सर, आपने जो कहा है मुझे लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि आपको 2014 में नेशनल आयुष मिशन का बजट था 75 करोड़, अभी 550 करोड़ हो गए. तो इससे साफ जाहिर है 5 गुना बढ़ा दिया गया है. और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इंडिपेंडेंट मंत्रालय का स्टेटस दिया, अभी कैबिनेट मंत्रालय का स्टेटस दिया है.
इससे साफ जाहिर है पिछली 7 साल के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंपॉर्टेंस दी गई है, इसके वजह से दुनिया ने स्वीकार किया है कि हमारे ट्रेडिशनल जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा दुनिया के मानव समाज को राहत दे सकता है अलग अलग बीमारियों से। धन्यवाद। माननीय ब्रिजलाल जी, ये क्वेश्चन रिलेटेड है सिद्धा मेडिकल रिसर्च सेंटर एट कोल्लीमलाई, तमिलनाडु। क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है? नहीं सर। नहीं। माननीय तिरुचु शिवाजी। Conducted a survey of medicinal plants in Kolimala Hills and collected 20 rare medicinal plants from Kolimala Hills. And one of the questions, main question is that whether the government has any proposal for setting up a Siddha Medical Research Center in the Kolimala Hills. And it is said no such proposal. Sir, when there are 20 rare medicinal plants have been collected by the survey, why don't the minister consider of setting up a plant there? That's all. Our simple question. Sir, I am repeatedly saying that I am interested to visit, considering the availability of the medicinal plant in that particular famous hill. So I am definitely visiting. After that, definitely I will examine the whole issue. Thank you. Question number 139, माननीय सीमा द्विवेदी जी। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जवाब सभा पटल पर रखा गया। पहला सप्लीमेंट्री सीमा जी। जी माननीय उप सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि जैसे सौर ऊर्जा, जैविक ऊर्जा अथवा इथेनॉल से बनने वाली ऊर्जा 3 ऊर्जा है, इसमें हम जानना चाहते हैं कि सरकार नीतिगत मामले में किस ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्राथमिकता से काम करेगी। सभापति महोदय, भारत सरकार तीनों ऊर्जाओं को महत्व बढ़ावा दे करके प्रधानमंत्री जी का रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 2030 तक जो महत्वाकांक्षी टारगेट रखा गया है कि 500 गीगावाट के लिए, इसी के लिए हमारा मंत्रालय तीनों ऊर्जाओं का विभागों को उतना ही परिपूर्ण महत्व दे करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें हम लोग सोलार के लिए पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री जी जो महत्वाकांक्षी 2022 तक 175 गीगावाट की जो लक्ष्य रखा गया था, हम लोग पूरा कर चुका है कि भारत सरकार आने वाला 2030 तक भी 500 गीगावाट की पूर्ण पूर्ति करेगी। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। महोदय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो सौर ऊर्जा के उपकरण आते हैं वो चाइना से मंगाया जाता है। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जो ये हमारा क्या चाइना से आयात करना बाध्यता है अथवा हम स्वदेशी उत्पाद करके अपने प्रदेश में रोजगार का बढ़ावा देंगे, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत के विचार को लेकर के सोलार एनर्जी के ऊपर हमारा मंत्रालय ने अभी आने वाले दिनों में 5 कंपोनेंट के लिए PLI स्कीम के जरिए हम लोग भारत के अंदर ही पैनल, सेल, बैटरी सारी चीज़ें यहाँ पर ही उत्पादन हो, इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग PLI स्कीम ऑलरेडी ला चुके हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कई देश के अंदर उद्योगपति ने उसको दिया है। आने वाले दिनों के अंदर जो जितना हो सका आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही उसका उत्पादन हो, हमारा मंत्रालय उसके ऊपर जोर दिया है। धन्यवाद। माननीय पी भट्टाचार्य जी। Chairman said the Honorable Minister has said the setting up of ultra mega renewable energy park to provide land and transmission RE developers on a plug and place basis. So I would like to know, Honorable Minister, exactly what are the places you are going to set up this type of park? Would you kindly explain it to us? Has it been done in a particular state or in different states in the country? मान्य सदस्यों का जो चिंता है, हम लोग बहुत सारे स्टेट में सोलर पार्क बनाने के लिए हम लोग इच्छुक भी है और वहाँ की सरकारों से जो भी वहाँ पर डिमांड करेगी तो हम लोग उसको मदद करने भी तैयार है। तो हर अलग अलग स्टेट के लिए
उसको हम लोग आपको जवाब हम लिख के दे देंगे। माननीय टीजी वेंकटेश जी। Through you to Minister, sir, use of green energy will be successful only. Just to giving the incentives will not be successful, sir. Mostly the state governments also should support this this subject, sir. The incentives government of India is giving, but state governments they are not adopting those things, and they are creating a number of problems. Number of state governments, the energy wheeling charges they are creating a problem. Again, captive units they are getting a problem, and all the problems will go to the tribunal. Tribunal judges, Please be sorry to say, specific in sir, your question. tribunal Please. judges are sleeping. They are not giving the decisions. Decades they are taking. For that, government of India also. Please should ask a study question, that. Mr. Venkateshwar. My question is, sir, tribunals are delaying the judgments. Government of India should monitor that one and sort out the issues early. Chairman, sir. Two or three issues have been raised. I'll just add to the reply, and I'll reply to this. One is manufacturing in India, make in India. Now, apart from having a PLI scheme, incidentally, we already had a bid in the PLI scheme in which we finalized manufacturing here of about 8,500 megawatts. And this is the second PLI scheme which the Honorable Finance Minister had announced in her budget, 19,500 crores. For that also, we are going to come out with a bid. This is not the only step we are taking. We have also set up a tariff barrier. So now, import of modules from other countries, I will not name countries, will attract a customs duty of 40%. And cells will attract a customs duty of 20%. We already have some manufacturing capacity here, about 15,000 megawatts worth, and we want to scale it up. We want to emerge as an exporter of modules. So as far as Make in India is concerned, we've made some progress. We are going to make more progress. There was a question of solar parks. Now we have solar parks almost about 30,000 megawatts worth, which are already there working, and projects have also come up, and we are adding more solar parks. The problem which the honourable member just now raised is a problem which has been engaging us, and to sort out that problem, we are, we have had meetings with the Forum of Regulators. The Forum of Regulators is a meeting, is a conference of all the regulatory bodies in the country. All the state regulators come, and we have emphasized to them 2 or 3 things. Number one, that they should not set up unnecessary hurdles in the setting up of renewable energy, and that the pendencies in their courts must reduce. The pendencies must come down. This is what we have emphasized. And those regulators where there are large number of cases pending, we have pointed it out to them that a large number of cases are pending in your courts for so many months. We have a system of monitoring the pendency of cases with the regulators. But this is a problem which we are aware of. The states also have an obligation. It's not only the central government. The states have an obligation, because energy transition is something which is essential for the climate. We have made a pledge. Every country has made a pledge. Every developed country and developing country have made pledges to carry out energy transition to reduce their emissions. We have also made pledges, and that these pledges are national pledges, that we shall transition to renewables so that we reduce our emissions. Incidentally, up till now, we have been successful. In fact, we had pledged in COP21 in Paris that by 2030, 40% of our energy power generation capacity will come from non-fossil fuels. Now, we achieved that target in November 21, 9 years in advance. Our rate of growth of renewable energy capacity is the fastest in the world, and it will continue to be the fastest in the world. So, we shall, of course, as my colleague said, we shall reach that 500 gigawatts of target. These hurdles are there, the regulatory hurdles, we will overcome them. Thank you. Mani V. Vijay Sai Reddy. The job creation potentiality of
capacity, per installed capacity in case of renewable usage of renewable energy technology is 25 times higher than the fossil fuel technology. So I would like to know from the Honorable Minister what steps the Government of India is taking for penetration of renewable energy projects into rural areas, and how much employment has been generated for the last 4 or 5 years as a result as a result thereof. Thank you very much, sir. अध्यक्ष महोदय, सोलर एनर्जी के अंदर हम लोग 3 कंपोनेंट के अंदर हम लोग जॉब देने का भी करते हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए से हम लोग क्वालिफाइड और ट्रेन मैन पावर भी हम लोग करते हैं, और उसी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर फरवरी 2022 तक 62,348 लोगों को हम लोग ने ट्रेन किया है। और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी फेलोशिप स्कीम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी लाइक AajTak और PhD के लिए टॉप 100 NIRF के रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर भी हम लोग काम करते हैं। और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी साइंस फेलोशिप के अंदर भी हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। तो सूर्य मित्र के अंदर हमारा सोलर जो एनर्जी है उसी के अंदर हम लोग 2022 तक 50,806 विद्यार्थियों को हम लोग ट्रेन किया है। उसी के अंदर 53% ऑलरेडी हम लोग एम्प्लॉय करके पे रोल के ऊपर हमको उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। और ऐसे ही वरुण मित्र के अंदर भी हम लोग जो सोलर वाटर पंप टेक्नीशियन भी हम लोग उसको ट्रेनिंग करते हैं, और वायु मित्र करके हम लोग विंड एनर्जी टेक्नीशियन के लिए भी करते हैं। तो करीब सोलर मैन्युफैक्चर के अंदर मॉड्यूल और कैपेसिटी एज ऑन डेट 11,500 मेगावाट, जॉब पर ईयर पर मेगावाट के लिए 2.6 के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो एनुअल जॉब पर ईयर के लिए 29,900 लोगों को जॉब मिलती है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 140 माननीय सुखराम सिंह यादव जी। 140 माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय चौधरी साहब जी। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है उसके बारे में जो तारीखें दी गई हैं उनका अध्ययन एक बार आप भी कर लें। इतना विलंब किन कारणों से किया गया, इतनी बड़ी धोखाधड़ी और 4-5 साल लग जाए जांच में, इसका क्या कारण था, और जिन लोगों ने इसकी जांच में लापरवाही की है उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, हमारे सभागृह में वरिष्ठ सदस्य माननीय सुखराम सिंह यादव जी ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, जिसके बारे में कुछ अखबार में भी न्यूज़ आई थी। इसी में ABG शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में है। इस कंपनी को 24 बैंक ने लोन दिया था। इस 24 बैंक में से 10 पब्लिक सेक्टर बैंक थी, 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक थी और 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, 2 फॉरेन बैंक्स थी, 2 बैंक लीडिंग थी। टोटल जो लोन था 14,349 करोड़ था, और इसी में लीड बैंक ICICI बैंक थी। अभी मैं थोड़ा 1 मिनट बताना चाहता हूँ सर। इसमें मैं बताना चाहता हूँ द लोन गिवन टू दिस कंपनी वॉज बिटवीन 2005 एंड 2006 1547 करोड़ लोन दिया था। उसी वक्त UPA गवर्नमेंट थी। उसी के बाद 2006 से 2014 8 बार 8% से ज़्यादा लोन दिया गया, 11,800 करोड़ लोन दिया गया। उसी के टाइम भी UPA गवर्नमेंट थी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोन देने के बाद ये टोटल एक्सपोजर वाज 16,397.57 करोड़, और इसी को बाद इस लोन को कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करा गया। ये जावे से इतना ये कर दिया, उसी इसका जो डेट है तो उसी टाइम भी UPA गवर्नमेंट थी। तो टोटल अमाउंट दिस वाज डिक्लेयर्ड एज ए NPA अकाउंट ऑन 1 जुलाई
1st August 2013 by the Canara Bank. That is also in the time of the UPA government. The CDR also was given in the UPA government. मैं बताना चाहता हूँ डिले क्यों हो गया. तो declaration was only. Declaration, all these things, please. All these things were given in the UPA government. इसी के बाद जब ये होगा तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ा. फॉरेंसिक ऑडिट हो गया. फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद जी फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर इसमें जॉइंट लीडेड बैंक जॉइंट बोल के एसबीआई के तरफ से कंप्लेन लॉन्च किया गया. एसबीआई ने सीबीआई को कंप्लेन लॉन्च किया और सीबीआई ने कंप्लेन लॉन्च करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन चलते गए तो इसी में एक रूल है सर. अगर ये हर एक केस को स्टेट में जाना पड़ता है, उनको परमिशन लेना पड़ता है. वी हैव टू वेरिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट्स, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज कंप्लेन एंड अदर रिलेटेड पार्टीज, वेरिफिकेशन ऑफ ह्यूज पाइल अप documents, gathering of information documents, scrutiny of the information, checking of the huge trial and transactions including foreign currency and verification of visit. इतना ही नहीं तो स्टेट्स ने, मैं बताना चाहता हूँ, हर एक स्टेट से परमिशन लेना पड़ा और वहाँ से आपने को स्टेट को टाइम लगा. मानिए लो प्लीज आप बैठ करके बीच में ना बोले. मानिए लो प्लीज. यस बोले. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये प्रश्न का उत्तर देने के बजाय यूपीए सरकार में कितने लोन दिए, हम कितने, मेरे पास भी बैंक का लिस्ट पढ़ते जाऊं क्या मैं? मेरे पास भी 20-25 बैंक का लिस्ट है कौन कितने कितने दिए. लेकिन क्वेश्चन ये है अगर इसको शिपयार्ड का पूरा डिस्कशन करना है इस सदन में, हम करने को तैयार है, उसके लिए नोटिस भी दिए हैं. धन्यवाद. लेकिन ये रेफरेंस जो क्वेश्चन एक है उत्तर दूसरी देकर कि पेपर में आना कल के दिन कि यूपीए गवर्नमेंट में ये हुआ, यूपीए गवर्नमेंट में. धन्यवाद माननीय लोपी. धन्यवाद. नहीं प्लीज फिर अगर यूपीए गवर्नमेंट में ही वही दिया है सप्लीमेंट्री कंटिन्यू क्यों करें? चौधरी 3 सेकंड सप्लीमेंट्री. आपका सेकंड सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड पे जाएगा. प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री. सरकार किसकी है किसकी नहीं है, जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है. मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जब एक छोटा किसान थोड़ा लोन लेता है उसको आप थोड़े समय में आपको हाउस बंद कर देते हो तहसील में, लेकिन इतने बड़े लोन लेने वाले लोगों के खिलाफ 25,000 करोड़ रुपया जिन्होंने लोन लिया और इसके बाद भी कार्रवाई में इतना विलम्ब क्यों हुआ? और मैं जानना चाहूँगा अभी तक कितने लोग जेल में गए और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई. धन्यवाद चौधरी साहब. और काफी हो गया. धन्यवाद. हो गया. आपने क्वेश्चन पूछ लिया. आप ब्रीफली आंसर दें. माननीय मंत्री जी ब्रीफली आंसर प्लीज. FIR was registered by CBI against 8 peoples. अगर मैं चाहे तो नाम बताना चाहूँ. नहीं आप ब्रीफली आंसर. तो 8 लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च किया है, उन्हीं को आउटलुक नोटिस दिया है और उनके ऊपर कार्रवाई सीबीआई की तरफ से चल रही है. माननीय नीरज डांगे जी. सर आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. व्हाट स्टेप्स इज द गवर्नमेंट टेकिंग टू रिफॉर्म lending policies so that similar fraudulent loans do not occur in the future? Thank you. क्वेश्चन रिपीट करिए सर. ये क्या रिपीट सर? आपने क्या स्टेप्स, आपने प्लीज आप बीच में ना बोले. आपने क्या स्टेप्स लिए ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो? दिस इज क्वेश्चन प्लीज. Online researching database frauds responsible for banks in the form of Central Fraud Registry has been set up. Similarly, banks to report frauds beyond the threshold amount of the police immediately. Then fraud risk and for early detection, a loan fraud prompt action taking, initiation of staff absolutely trained by the RBIs as well as the institution of comprehensive automized early
warning system in public sector's bank is required. माननीय प्रियंका जी. That you've given me a chance to ask a supplementary question on this specific question. सर, हमें तो बचपन से सिखाया गया था गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है और साथ ही साथ फ्रॉड देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी ने राज्य सरकार के बारे में मुद्दा उठाया था। देश का सबसे बड़ा फ्रॉड 2019, हाँ थोड़ा तो हंसी मजाक कर लिए, सब गुस्से में नहीं रह सकते। सर 2019 में फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था। अप्रैल 2019 में इसको फ्रॉड बताया गया था और मैं साहब को बता दूं आपके माध्यम से सर मिनिस्टर को कि ये आईसीआईसीआई बैंक लेड कंसोर्टियम था जिन्होंने ये लोन दिए थे, ये कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं था। 2019 में ये फ्रॉड डिक्लेयर होता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए एसबीआई 8 नवंबर 2019 की मांग करती है, पर फर्स्ट एफआईआर जो लॉन्च होता है 7 फरवरी 2022 को होता है। इतना विलंब क्यों हुआ और क्या इस कारण ये है कि गुजरात गवर्नमेंट उनको संरक्षण दे रही थी? थैंक यू, नो कमेंट, थैंक यू। बस ये मेरा सवाल है। This is a wrong question asked by the honorable member. कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी की जांच कर रहे थे। मैं जैसे पहले ही बता दिया कि सीबीआई को हर स्टेट में जाके हमारे मोदी साहब ने जैसे बताए थे कि स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है जो पुलिस को जाके, तो इसीलिए वो डिले हो चुका है। और तो सीबीआई ने जैसा ये हुआ है तो फ्रॉड डिक्लेयर करे और एक्शन लिया है। माननीय सुशील कुमार मोदी. ओह प्लीज मैडम, एक साथ उत्तर दे मोदी जी प्लीज. मेरा भी उत्तर इसी से मिलता जुलता है, एक साथ उत्तर दे। एक मिनट, आप पहले माननीय मंत्री को बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ उसी को One or two clarifications, sir, for the question asked by the honourable member. Public sector banks are also involved in this. ICICI may have been the lead bank of the consortium, but clearly there are 10 public sector banks in this. One, sir, and then there was a forensic audit report which was done by, which was received by the SBI, that was done by a audit firm called Ernst & Young, and that was submitted in January 2019. Then I'm sure all honorable members are fairly familiar. Banks have an institutional way of going through assessing a forensic audit report. That fraud identification committee, as it is called in SBI, took 5 months over it, and I wouldn't want to say that it was delayed there at that point. 19th January, 5 months later, on 19th of June 2019, they recognized it as fraud. That is SBI's own team. Huh? 3 years. 6 months. Please, Mr. John Britas, please. Please let her speak, please. I just want, no, here there is, Please. no, you're confusing Don't be everybody. helpful. I'm sorry, if you only listen, you wouldn't do that. First, 19th January 2019, 19/6/2019. Within 5 months, they have recognized, based on the forensic report given by Ernst & Young, that it is fraud, and SBI has given the whole detail to CBI on 8/11/2019. So again, within 4 months, they have gone to CBI to say file the case. So SBI has been moving January to June to November within 2019 to make sure that the case is handled, and after that SBI's case has been pursued from 8/11/2019. Yes, earlier between 2014, when the last 42.6% increase is being given to a organization which is going through corporate debt restructuring. If you wouldn't mind, honorable members would please accommodate that the MOS was only trying to say that 1 year to another year to third year to fourth year. Till 2014, 8 times
if the restructuring happens, and every time there's also an enhancement of money being given. He only has tried to highlight the fact that between 2005-06 till early 2014, periodically increasing the amount is happening, and to the extent that the last one which happens early March 2014, 42.6% increase has been given by the banks. Now, I'll move from this to one other related question which was asked. What are we doing about such things not getting repeated? Chaudhary Sahab probably asked that question. Simple, sir. There has, in this particular case, there's not been one credit enhancement after 14, when 8 times money has been given for a company which is under restructuring. That itself is the biggest fraud perpetrated, and unfortunately, I'm with my MOS to say prior to 2014. Thank you. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. सती महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि you have mentioned in your reply, madam, you have mentioned in your reply that the final complaint was filed on 14/12/2020. मैं फिर से 14/12/2020 को फाइनल कंप्लेंट एसबीआई ने फाइल किया, तो सीबीआई को 14 महीना क्यों लगा एफआईआर दर्ज करने में? क्या ये बात सही है कि कुछ राज्य सरकारों ने जिन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, उन्होंने कंसेंट विड्रॉल के कारण उन राज्य सरकारों ने कंसेंट देने में देर की और इसके कारण एफआईआर दर्ज करने में और 14 महीना लगा? तो मैं जानना चाहता हूं कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन लोगों ने कंसेंट देने में देर की और जिसके कारण ये लॉन्च करने में समय लगा? जो है कम समय है, ब्रीफली आंसर. समझे? माननीय उपसभापति महोदय, मैं आंसर देते समय बोला हूं कि जब सीबीआई इंक्वायरी होती थी तब कुछ राज्यों ने जो उनके इंक्वायरी करना पड़ता है तो वहां जाके रिफ्यूज किया है, तो उसने उनसे कंसेंट देने का विड्रॉ किया था पावर. तो इस टाइम सीबीआई को हर राज्य में जाके परमिशन लेना पड़ा और उसी में डिले हो गया. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर डिलेइंग द इंक्वायरी. नंबर 1 तो महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य है, और महाराष्ट्र राज्य है, और 2-3 राज्य है, मैं बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 141. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चनर इज नॉट देयर. माननीय MM अब्दुल्ला जी. माननीय MM अब्दुल्ला, प्लीज. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I would like to know whether Union Government has a policy to address the shortage of ambulances. Whether the Union Government works on a time limit. What is the time before which an ambulance has to reach patients and decide the number based on the time this time? Thank you, sir. आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की विभाग से इमरजेंसी सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है. और मुझे खुशी इस बात की है कि 2018-19 में जब 1100 करोड़ का एम्बुलेंस के लिए प्रावधान था, वो आज बढ़कर लगभग 2400 करोड़ हो गया है. तो मुझे लगता है ये एक दुगना बजट है जो एम्बुलेंस सर्विस सेवा को दे रहा है. सर, इसके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि एक तो एडवांस लाइफ सपोर्ट है जो कि ALS एम्बुलेंस सर्विस है जो इमरजेंसी पेशेंट को टैकल करती है, जो विथ वेंटिलेटरी सपोर्ट, विथ कार्डियक मॉनिटरिंग एंड विथ 1 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसमें रहते हैं. वो लगभग आज देखा जाए तो 12,000 है. BLS जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट है, वो बेसिक मॉडल फॉर इमरजेंसी, लेकिन उसमें वेंटिलेटरी सपोर्ट नहीं रहता है. सर, मैं कहना चाहूँगी कि ये स्टेट ने सर आप सुनिए, आदरणीय उपसभापति महोदय, अगर राज्य सरकारों ने डिमांड की है PIP के थ्रू तो
उस पीआईपी के माध्यम से केंद्र सरकार ने लगातार वो बजट दिया भी है, वो Question hour is over, please. Question hour is over. House stands adjourned to meet at 2 p.m.